Hello, tech enthusiasts. Welcome to our channel, where we delve into the fascinating world of JavaScript, from its powerful capabilities to its endless possibilities. We'll unravel the secrets of this dynamic language. Stay tuned till the end, as we'll tackle some challenging technical interview questions too. Let's dive in. All right. So guys, I think we can start, right? So let me open up my whiteboard and This video will cover: what is a JavaScript? Why is it used? For what it is used? JavaScript programming. Basic understanding of technical interviews. okay, cool. ठीक है, तो guys, आज से हम अपना JavaScript start करेंगे, right? And JavaScript in whole lot of detail. I think how many of you have worked with JavaScript previously? Anyone? Anil, Gaurav, Rupali, Shruti? आप में से किसी ने काम किया है क्या JavaScript में पहले? Anyone? Okay. 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 ठीक है. All right. ठीक है. तो आई थिंक थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है हम सबके पास, थोड़ी थोड़ी, राइट? अब हम एकदम कोड से समझेंगे कि जावास्क्रिप्ट होती क्या है, क्यों होती है, कैसे चीजें काम करती हैं. हम इसको इस तरह से भी लेके चलेंगे. एक चीज जो हम फोकस कर रहे होंगे, तो इसको अच्छे से समझते हैं कि जो हमारी जावास्क्रिप्ट है, इसको अच्छे से अभी देखेंगे हम. पहले मैं आपको अंडरस्टैंडिंग देता हूँ कि हम क्या चीज पे फोकस कर रहे होंगे, क्या चीज पे फोकस नहीं कर रहे होंगे, एंड क्या चीज पे फोकस नहीं कर रहे होंगे जिसके पे आपको फोकस करना चाहिए, राइट? तो जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट. ओके, तो इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन करता हूँ. तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जनरली बात करते हैं. व्हाट एग्जैक्टली अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज? Programming. Correct. So basically, a programming language is used for two purposes. One is for development like software development. Like JavaScript is used for web development, right? जैसे कि हम बात करते हैं, like JavaScript is for, let me hold this up. JavaScript is for web development, correct? Java is for example, game. Just for an example, it can be used for a lot of places. C++ for compiler development, and lot more, etc. Correct. Similarly, a programming language is used for problem solving. So what exactly it means? So basically, just 1 minute, I just wanted to have some notes for me that I need to do this thing. One is the technical interviews. I'm going to share with you how exactly technical interviews looks like, and what are the parts of it, right? So we'll come into this part in a bit later detail. But yeah, coming back, so with the help of programming languages are used for solving problem. What kind of problems? DSA problems. What is DSA? Data structures and algorithm. Data structure and algorithms. Correct. So this is the second thing that we do with any programming language, right? We are going to focus on the development side of JavaScript or any programming language,
because this is purely focused on, we are purely been focusing on the development side, right? We are not going to focus on the problem solving side. Correct. So because the main objective of learning from this course is to get stronger in development side, right? Whereas problem solving is also a part of, very important part of your core engineering, right? That's also you have to be focusing on, right? So I've seen a lot of places like people are just focusing on the development side, not working on the problem solving side. So that's a problem, right? You have to do some few of the problems, easy, medium, hard problems, right? Because these are the things can be asked in the interviews. Correct. So we are going to focusing on the development side. That means web development, front end, back end, that place. Whereas problem solving side is for like array problems, linked list problem, tree problem, because that's a whole subject. DSA is a separate subject, right? It is a totally separate subject. It is totally apart from development, right? So that's where it's a little bit kind of outside. But I would not say this is not important. This is important, right? This thing that you should have a knowledge. It's a good thing. I've encountered a lot of interviews. When I have never encountered DSA problems, but still, I never recommend my student not to focus on DSA, right? So DSA is also very important. So if you need some resources, need help, feel free to ping me. But yeah, just keep this in mind. When you got some time, you are trying to solve some DSA problems, right? Any questions, any doubts in this part, guys? In this particular section, any questions? Any one of you, like any kind of question you are having? And don't think it's a blunt question. It's a very vague question. Just feel free to ask. We are very small. So we can skip the jQuery part. Yes, absolutely. Yes. So I think we can do all that thing like the animation in the JavaScript, because I think that jQuery is only used for the animation part. I think jQuery is not actually very much. When I learned jQuery, I think I learned in 2020. I think today's 2023. So actually, currently in the market, I haven't seen anyone using jQuery. Also because I don't remember why people stop using jQuery. Okay, just 1 second that let me think of that. Basically, jQuery is kind of it helps you in writing code faster, right? It's kind of that. So it's a JavaScript library. If I search over here, jQuery, so it's a JavaScript library. So you can see it's a JavaScript library, right? Designed to simplify HTML DOM transversal and manipulation. So basically, we have learned Bootstrap, Tailwind. It's something like that for JavaScript, right? So, but again, as you know, like it's a like whole lot of bulky thing, right? So people stop using this, and currently very small percentage of people are using them. So jQuery is not very much popular nowadays. So, and it's very simple, like kind of like I think I have worked with jQuery very long back, and as I could remember, I could not even remember the syntax as well. But if someone asked me to revise that, it's very easy. So it helps you in making your JavaScript very, you can say very easy. So easy part is like easy. So we focus on a JavaScript, and yeah, we are going to work write pure JavaScript. It's a like bulky thing. After some time, you get understanding why we stop using JavaScript, jQuery in detail. But yeah, I think Shruti is asking like, are we going to see DS? No, Shruti, like we are not going to focus on DS part. Like we are just focusing on to the full stack web development. But yeah, side by side, when time comes, like when there is scope of discussion, we are definitely going to discuss what exactly DSA and DS things are there, right? I think in some of the classes I have also mentioned like
There are other things that is we are not going to discuss, but as an engineer we should be having focus on. You can have a like good focus on like other subjects like of engineering, like DBMS, database management system is there, operating system, networking, or I think networking is there, oops concepts are there, oops subject is there, system design is there. So there are a few couple of subjects that if you got some time, definitely give them a read. And if you need some resources, feel free to ping me, right? Apart from these, like there are other things that are like let me share a quick example that you will definitely get relate to it. Like when I was in my college, when I was in my school, people used to tell that school curriculum is good, but you have to do extra things that actually empowers you, like what exactly apart from academics, apart from an academics, as a student you should be good in communication skills through your, maybe you're speaking assembly, right? That's a good thing. You should be focusing on your sports. You should be focusing on into or like inter-school competitions things, right? So basically this all adds up to your personality, knowledge, and a good standard, like out of like others. So these subjects, I would say, is going to add that kind of cherry on the cake things, right? So I highly recommend you to, if you got some time, do check that out, right? And I'm pretty sure like after 2 hour class, you are very much like having a lot of work to complete after the class and do a lot of things. But yeah, I could not deny that these subjects are very important, like operating system, oops, operating system, networking is there, DBMS, most popular, most important, DBMS. Then comes, what is this? Okay, system design is optional, I would say. System design, and yes, I think these are the things that you can focus on, and it would be good as a developer or as an engineer. Yeah, right. So we'll be focusing pure into the development side, but yeah, these are the things that you can focus on. Yes, Shruti. But don't you think that some of the topics of data structure will be required, like array, objects, and in JavaScript? Not really, not that much. Like data structure understanding is we are going to see that's always be there in any programming language, like what type of data structures we are going to use. But in terms of algorithms like sorting, searching, like traversals, and a different variety of things, like a different type of questions like linked list and variety of those data structure, we are not going that much deeper, Okay, like okay, these got it. graphs and something like that. Yeah, got it. Yeah, basic data structures we are going to see. Yes. Okay. So yeah, I think that's about it. Now, I just wanted to give you a quick basic understanding for your technical interviews. So let's quickly understand that. So guys, anyone of you have ever given like any technical interview for any of the company, like any idea about that? What are the rounds are there? What type of things people do ask? Any kind of question, any kind of thing, these things you might have, technical interviews. Anyone? Okay. All right. So basically, guys, there are a lot of different type of companies out there. Gaurav, like that's a part of JavaScript. We are going to cover that after a few days. So that's a part of JavaScript. Yeah, it's a very popular question. I know that it's a very popular question, and you're going to understand this thing in depth, definitely. So yeah. So I think we can talk about this maybe later on. What type of interview questions are there? But I would say keep on watching interviews, series, and these things. This will definitely help you a lot. Okay. I think yeah, that's pretty much about it. Let me delete this. Delete all.
Now, guys, let's start with JavaScript, right? The heart of your web, the whole web, right? Did you know more than 90% of the websites are running on JavaScripts? Um, more than 98% of the websites are running on JavaScript. So 98%, the whole web is most of 98% of your web is based on JavaScript. So JavaScript is that much strong nowadays, right? Let's understand what exactly is JavaScript. So what exactly JavaScript is? So JavaScript is one of the most popular programming language. So we'll talk about programming language. We are not just learning things after one chapter and another, but we are going to go deeper. What exactly a programming language is? What is the requirement of that? All of these things, right? So let me search that online and we'll see what exactly JavaScript is all about. So JavaScript. So JavaScript often abbreviated as a JS. So you can say JS, JavaScript is a programming language that is one of the core technology of World Wide Web. That's the whole web. And 98% of the website use JavaScript on the client side of the web page behavior. Yeah, so that's pretty much about it. And if I show you the most popular programming language, so you can see your JavaScript is there. Over here as well, you can find JavaScript somewhere. This is the JavaScript. Here you can see JavaScript top language. Here you can see JavaScript. Every single link on the whole internet will show you that it is one of the most popular programming language, right? So that's about it. So JavaScript is a programming language, right? It's a programming language. Okay. Why do we use JavaScript? Oh, why do we use JavaScript? JavaScript used in variety of the domains. For web, it can be used mobile development, that is mobile apps. You can develop mobile apps with the JavaScript, right? It can be used for desktop development. Desktop means desktop apps, desktop development, game development, etc. So it can be used in variety of the places, domains, or fields, you can say, right? Anything I would say, like, it's very simple and easy to learn, right? And yeah, and these are the benefits of using JavaScript. Also, what exactly it do? It actually adds a functionality to your website, right? What do you understand by programming language? Let us know in the comments section. So guys, now I just wanted to know from you, please बताइए, what do you have an understanding for a programming language? What exactly, what do you mean by programming language? What do you understand by programming language? What exactly it is? Anyone? Anyone who want to give an explanation? What is a programming language? You all have heard of what exactly a programming language is, right? So what do you think? What are programming languages? So we have learned HTML, CSS, JavaScript, HTML, CSS, many other to come. So what exactly are programming languages, right? So I think everyone have heard of this term, but who will explain what exactly programming languages? No matter what do you say, just share your understanding. What do you think a programming language is going to be? When I was child, programming, I would think of like, I'm explaining you my thing, like what exactly programming language mean to me. Like programming means like hacking. It's a shady term, right?
programming or hacking or unethical things I would think of. And what programming, like black screens, black screen, a lot many, right? So these are the things, these are the terms that come into my mind when I was thinking of programming, right? So what do you think, guys? What exactly programming is? So Anil is saying like a language that can explain system about the task that need to be done. Yeah, precise, correct. Anil is saying like language that can explain system about task that need to be done. Yeah, correct. Okay, anyone else? Like Rupali is saying a set of instructions. Yes, absolutely. So programming is the set of instructions. Correct. So set of instructions, we can say set of instructions. So Anil is saying like explain system about task to be done. Explains a system about task to be done, right? Anything, guys, like everyone, like share whatever you think, do share. What exactly programming language means? Okay, so let's understand what exactly programming language is. So what exactly a programming language is, right? So let's I think in this class we haven't seen that, so let's take an example. So Shruti is saying like it's all about behavior. When with the help of programming language we make things functional. Yeah, absolutely, we can make anything functional. Yeah, so we'll understand what exactly programming language is for a computer. Right. So basically let's understand. So I'm going to draw something. Let me draw a computer over here. So this is what your computer is. And yeah, so here it is your computer, right? And just imagine like this is me. What are languages? What do all these languages mean? Correct. So basically I'm a human, right? I'm a human, it's a machine, correct. First of all, let's understand languages, right? What is languages and what all these things means, right? So let's understand that. So basically anything, any kind of object, entity inside this whole world need to be communicated, right? Everything need to communicate, correct. So we as a human have couple of languages, correct. What are those languages? So we as a human can speak Hindi, Telugu, English, etc., and thousands of other languages, right? So these are our languages, right? So what is the language of a computer? Who will tell? What is the language of a computer and why? First of all, let's see what is the language of a computer. What is the language of a computer, guys? So Shruti is saying binary. What exactly binary means? Okay, so Shruti is saying
like the language of a computer is 0 and 1s, right? Okay. So Shruti is saying like the language of a computer is 0 and 1. Are you sure, Shruti? First of all, please do give me the confirmation. Are you sure 0 and 1 is the language of a computer? Okay. Or what if I say that the statement that you have mentioned is wrong? What if I prove that it's wrong? Okay, so let me share something interesting with you. So I think Shruti is saying that her computer understands 0 and 1s, right? So that means any other computer, not just Shruti's computer, any other computer in this whole world can understand 0 and 1s, right? So okay, let me do an experiment. So I think 0 and 1 can be understood by a computer. So let me repeat 0 and 1 again and again. Let's see, is there any behavior change that happens in a computer? So if I speak any random number like 001, 01, 0001, right? That's a random thing. Is that number or these 0 and 1s made any changes in your machine? Not in mine. Anyone? The numbers that I've spoken right now, did that made any change in your machines? Anything, any action you have observed? Is there any change that you found in your computer? Actually, I was saying, like, to communicate with computers or any machines, we need programming languages. Okay, but at the end, machines will understand only the language of zeros and ones. This is what I was saying. So Shruti, I am also saying 0 and 1s only. Then what is the problem with that? Oh, sorry. So what is the problem with that? That is also 0 and 1s, right? I'm also directly giving an instruction. What is the problem with that 0 and 1? You said it will understand 0 and 1. That's where I changed my language to 0 and 1s. But still it is not understanding that. What's the problem? Where is the gap? So the zeros and ones represent the signals of the semiconductors. Yeah, absolutely. Yeah, Anand, like that's precise. That 0 and 1s means the state of an electronic device, right? Or electrical circuit. So 0 states that the electrical circuit is open, and 1 states that electrical circuit is closed, right? So in I will show you a very simple electrical circuit. That's of a cell, that's of a bulb. Simple electrical circuit diagram. So basically, in a core, when we break this whole computer, right? A computer is made up of a lot of electronic. It is made up of electronic devices like RAM, ROM, and a lot of other stuff, right? Internally, these electronics are made up of small electrical circuits, right? Electrical circuits, right? So basically, as a human, how we are made up of? We are made up of organs, right? We are made up of organs. Organs are made up of molecules. Molecules are made up of cells. Cells are made up of atoms, and this goes on, right? We're breaking a human into smaller pieces, right? Similarly, we have broke our computer into smaller chunks, like electronic devices,
like RAM, ROM, transistors, a lot of other things, right? Registers, cache memory, and a lot of other things are there. Electronic devices in short terms, right? Internally, when we broke these things further, we could see electrical circuits, small electrical circuits, right? So at the core level, a computer is made up of an electrical circuits, right? These small electrical circuits, and the number of these electrical circuits are like super huge, like millions and billion of circuits are there, right? So basically, the core thing is a electrical circuit. So let's see how exactly electrical circuit looks like, right? So basically, I've just opened a simple electrical circuit, and I think this is a good example to understand an electrical circuit, right? So basically, you can see this is a very simple electrical circuit, right? And this electrical circuit can have only two states, right? This is the switch, right? And through this switch, you can just have two states, either on. This circuit can have either on state, either off state. Correct. When this is short, that means it is on. And when this is not short, then that means it is open. That means off. Correct. So at the core level, this is the core of any computer. Any computer is made up of this core thing. And this particular thing can understand two things. Either it is on, either it is off. It does not understand what is happening outside. It does not have any feelings, no thoughts, nothing like that. It does not even care what is happening in the space. It just knows two things. First thing is that when it is open, that means it is off. And when this is closed, that means short. That means it is on. Apart from that, this circuit does not know anything. Does not know a single thing, right? Does not know anything apart from this. Either on and off, it is the whole world of this particular circuit. It does not even care about other things. It just know either it have to be on or it have to be off. So this is the core of any computer, right? And at the bottommost layer, at the bottommost layer of this computer can understand either on or either off. That's why we call it as 1 or 0, right? So the electrical circuit inside this computer can understand this 1 or 0, right? And collectively we say like computer understand 0 and 1s, but this is not true. Computer is a big thing. Actually, this electrical circuit inside a computer only understand either on or off thing. So that's a majburi of that whole circuit, right? It cannot understand apart from that. Okay. So the thing that we say generally 0 and 1s is actually the state of the circuit. If it is closed, that means on state. And when it is open, that means it is off state. Off means 0, on means 1, right? So that's why we say computer can understand 0 and 1s or binary language, right? But the actual truth is that's just for saying, but actually it understand this thing, either on, so off, on, off, on, off, on, off. That's it, right? So that's the whole understanding that a computer knows. Correct. So that's why we say it's understand a binary language, or a computer can understand 0 and 1s. And what exactly 0 and 1s is, like I generally think of initially, like a computer can understand 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, not this 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0. So I think it can understand this. If I give this kind of through a wire to a computer, it can understand that. But that's not true. That is not true. It does not mean this. It means that you're passing a signal. You're passing a signal in such a way
that it is opening and closing the circuit again and again, right? So that's the actual core thing of any programming language. Apart from that, it is the actual language of a computer. It can understand zero and ones in that particular terms, right? So guys, let me know, like, do you have any doubts in this part? What exactly does it mean? Any kind of question? Do you got clear with this? Why do we say zero and ones is the language of a computer? That is why, because it have electrical circuits. Is this thing is clear to everyone, or you have any doubts? Let me know, guys. Let me know, everyone. Do you understand this or any doubts? Okay, Rupali got it. So what if we have to give a single line definition for programming language? I think just after completely understanding this whole what exactly is going to be played, I think then you can easily give a definition to one single line definition to programming language. We just understood about what exactly a computer understand, right? And what exactly we understand. We haven't seen what exactly programming language do the magic, right? So that's we are going to come upon right now, right? Then after that, you can explain that in one single line. Okay, so guys, everyone understood this, like what exactly zero and ones means, and do you want any other example to understand this? You can tell. Everyone got clear? Not clear? I would say, I would not say it's wrong. I would say that if you mean that zero and ones you have to type, that's where it's wrong. But if you mean that zero and ones is the signal, or is the actual circuit signal, like a switch on and off, that means it's correct. So you tell, like, what was your answer? It is like zero and ones in terms of like keyboard inputs, or it is in terms of like electrical inputs that we just saw. That's where you can decide like it is correct or not. So there is nothing such like 0 and 1. These are just representation of signals. Absolutely. And it's just assumption that whether we take 0 on or 1 on. That's also to us. Yes, correct. So we generally take one as on and a 0 as off. Correct, Anand. Yeah. So okay, so we understood this, like what exactly a computer understand and why. The reason why, I hope it is clear. If not, you can let me know like why it understands zero and ones, because of the fundamental thing of any computer or any electronic device is that electrical circuits. So that's where it understands just zero and ones, either on switch or an off switch, right? So yeah. So now the problem over here is that this is a computer, this is a human, right? And both of them are having different languages, correct? A computer can understand 0 and 1. I will say 0 and 1. You can understand like what type of 0 and 1 it means, right? And a human can understand these many languages. So you can understand like computer cannot understand our language, we cannot understand computer language. So the communication over here is not possible, correct? So that's a problem over here. So to communicate with a computer, right? To communicate with a computer, also guys, this 0 and 1s is also called as a low level language. Right? Low level language, we also say that, right? And the problem over here is again the same, that we cannot communicate as of now. There is a communication gap between them. We cannot communicate with each other because of language difference, correct? So basically what happens now is
there are a lot of programming languages already written, right? So what exactly programming language do? So first of all, let's understand what exactly a programming language is. So let me clean up this so that you will easily focus on the important parts, right? Okay, and let me clean up this. Let me clean up this. Yeah. Okay. So we have seen that there is a problem with the communication, that computer cannot speak in English, Hindi, Telugu, right? And as a human, I cannot speak zero and ones, right? I cannot give a direct signal like zero and ones. It's not in my hand, right? And I cannot generate zero and one signals again and again. And to a particular electronic device, to a particular transistor, it's not possible for me, correct? So there is no communication that could happen. So what happens now is there is an intermediate language. So basically, there is somewhat a language that is generally called as programming language. That's a programming language, right? It's a kind of a intermediary language, not exactly, but it's kind of very much close enough that will help you in converting this into machine understandable code. So basically, to solve this problem of communication, a programming language is introduced. What exactly a programming language is? So it's kind of a language that is very much similar to English language, right? It have a lot of keywords of English, right? And it helps you write code or instructions. Inside this programming language, you can write instructions, correct? Like computer does not know anything. Computer is very blank, or you can say it's very naive. It cannot do anything in its own until you introduce any AI in it. But computer cannot do anything on its own. You just keep your computer on for thousands of years, it cannot do anything, right? It's very humble, it's very like simple, right? It cannot do anything on its own. So basically, to do anything on the computer, to do anything by your computer, you have to give some instructions, correct? So programming language, inside programming language, you can write instructions, correct? And these instructions are generally written in a language that is similar to English. Similar to English, correct? So we generally write a programming language, a program code, correct? But still, now again, a question over here is that this language cannot be understood by your computer because computer wants zero and ones. It cannot understand that, right? Computer is saying again and again, I can only understand zero and ones, right? So writing a programming language is a bad choice. You will think, right? We already have these many languages. Why we have introduced programming language? The point over here is that it's very similar to English, that most of the people in this whole world know. And also inside this, you can write a lot of instructions, correct? Now the problem over here is that your computer again cannot understand this programming language. So basically, in most of the computers out there, you can install a software. You can install a software. What exactly this software do? These kind of softwares are called as compilers. Compilers and interpreters. Correct, Shruti. Absolutely correct. So basically, compiler or interpreter helps in converting high-level language to low-level language, right? So here, Shruti have introduced a new term that is called as high-level language. So low-level language we have defined as zero and ones. High-level language is your programming language, right? So programming language is also called as high-level language, right?
So these are the softwares that are used to convert. These are the softwares that are used to convert your programming language. You pass your programming language inside this. Correct. You pass your programming language inside this. So let me use. Okay. So you pass your programming language, your program code inside this compiler, and this compiler magically converts this programming language into 0 and 1s. Correct. So compiler and interpreters, these are the type of softwares. Like software type is browser, right? So browser could be your Chrome browser, Firefox browser, Opera, Edge, right? But the type of the software is a browser, right? Similarly, these are the type of softwares that helps you convert your programming language into 0 and 1s, correct? And vice versa as well, correct? Through this solution, you can easily convert your programming language into 0 and 1s, and 0 and 1s into like human readable code, correct? So that's the funda of your programming language and your compiler and interpreter. Through this, I can learn this programming language easily. I learned this programming language, then I code this. This code, I code this inside this language. This code go inside the compiler and the interpreter or the interpreter and get converted into 0 and 1s, right? And this 0 and 1s is given to a computer. And this is the whole list of like instructions, 1, 2, 5 instructions. And these all instructions, my computer will do one by one, or depending on how you want them to do, correct? So all of these instructions are given to your computer and your computer will do all of these instructions, correct? So this is the whole process. We started with a problem that I cannot directly communicate with my computer. So this is the actual problem, right? Then we came across a language that is a programming language or a high level language that is very similar to English or most of the languages, right? Right. And that language can be converted into 0 and 1s through these softwares. And when it got converted into 0 and 1s, your computer can work now because it can understand this language and it can work. It can make your work done in a couple of seconds, depending on how complex that work is, correct? So that's pretty much the whole understanding, that you should know what exactly programming language is, where it lies, and what type of problem it is solving. It's that simple. When I was kid, I just think of like programming is a very hacky term. It's for bad people who are just hacking, but it's just a simple thing that is converting your thinking or your instructions into 0 and 1s through these softwares, and your computer is doing something for you, correct? This is the pretty much understanding of your programming language and what exactly compiler and interpreter do. These are the software that converts your programming language into 0 and 1s. That's pretty much the understanding for a programming language, or not just one, any of the programming language. You just think of Java, C++, Python, JavaScript. All of these things are based on this particular concept, right? So yeah, guys, I think that's pretty much about this understanding. Do you have any doubts? Do you get clear with this? What exactly this whole diagram over here means? Is this thing is clear, not clear? You can let me know. Or confusing? थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ज्यादा नहीं है. So कौन सा part confusing है गौरव? Can you please tell? ये जो कंपाइलर इंटरप्रेटर वाला पार्ट है. अच्छा ठीक है. Okay. Is machine language a programming language? Let us know in the comments section. Sir, machine language is a programming language or is it only low level language? Like, can we call it as programming language? Machine language तो आपकी 0 and 1s हो गई. Yes, sir. So can we call it as a programming language? What do you think? I think so.
Now, These are also set of instructions. Which one? This one. This one, yes. These are just the instructions. This is just your programming language. Okay, so machine language is not included into programming language. No. These are the instructions. Okay. Anand, I think it's been so long to talk to you. Can you please quickly introduce yourself? Yeah, sure, sir. So actually, I am not included in this batch. I am just been given access to this course. Okay. I will be there in your next batch. Okay. So can you please quickly give Yeah, us sure, introduction? Yeah. So by profession, I am a recruiter. Okay. And, I have 1 year of experience in recruitment. Apart from that, I am a CS graduate Okay. from IMS Ghaziabad. Okay. IMS Ghaziabad. I think that's a management college as well. I think. Yes, sir. Yeah. You did your BTech from there. Yes, sir. IMS Ghaziabad. I think I have a lot of known people from there. And which organization you are actually recruiting from past 1 year? Vaco Binary Semantics. Actually, I work for Canadian clients, so my total project is from Canada based. Okay. I do technical hiring. Okay. Got it. So I think in my first company, those people are actually having that kind of similar working that they actually hire people from India and based in Sweden, they actually get them hired, right? So I think there's a common word in the market you can call, you might have heard, US IT recruiter. sorry? US IT recruiter. Okay. So this is the common word that represents this kind of profession. Okay. That's great to know. Like great work. And you are got interested into the tech. So when you did join this whole course? So today itself, actually. Okay. I joined 10 days This is ago. the first class. Yeah. Yes. Great. So now that's great. Good to see you, Anand. So I think you are into this particular batch or you're doing DSA as well. So I'm in this batch only, like a full stack web development. Okay. So actually, Anand, so we have started with JavaScript. We have done HTML and CSS in the last month. No problem, sir. Right. I think you can have the access to other lectures as well. So if you got time, do watch them and Okay. if you stuck anywhere, just feel free to ping me. Sure. Okay. Yes. Okay, cool. So yeah, guys. So even quickly, let's understand. I think Anand, Gaurav, Rupali, Shruti are comfortable with Hindi, like mix English and Hindi. So I think you are also comfortable with that, or I think I will have a little bit of problem. Anand, are you comfortable with English Hindi mix? Yes, sir. I'm totally comfortable. ठीक है. तो हाँ ठीक है. Okay, so let's quickly do a recap of this, right? Let's quickly give it a recap of this. What exactly it means. Okay, so let's understand through this same example. So this is your computer, correct? This is your computer. आपका कंप्यूटर है and जैसा हम जानते हैं कि a computer can understand 0 and 1s, that is on or off, right? At its core, correct? So it can understand 0 and 1s only, right? So the language of a computer, we can say, हम कह सकते हैं कि a language of a computer is either on or off. On off पूरे कंप्यूटर का नहीं, बट इसके अंदर जो सर्किट्स लगे हैं, राइट, जो स्मॉल सर्किट्स लगे उनका ऑन और ऑफ, राइट, वो स्मॉल ऑन और ऑफ होंगे तो वो चीज कंप्यूटर समझ सकता है, करेक्ट? सो दैट्स द लैंग्वेज ऑफ अ कंप्यूटर, करेक्ट? नाउ एज अ ह्यूमन, लेट मी ड्रॉ अ ह्यूमन. Let's take a human over here. So let's take that this human is Gaurav, right? Let's take an example. Like this human is Gaurav. So what are the languages Gaurav know? कौन कौन सी लैंग्वेज गौरव जानते हैं? गौरव बताएंगे कौन कौन सी लैंग्वेजेस आप जानते हैं? हिंदी, इंग्लिश.
Any other language like Punjabi, Haryanvi, गढ़वाली. Garhwali? I think वो पहाड़ लैंग्वेज होती है. Yes. अच्छा ठीक है, गढ़वाली. तो हिंदी, इंग्लिश एंड गढ़वाली. आई थिंक मेरी थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो प्लीज बेयर विद Okay, दैट. okay. तो ठीक है, तो गौरव ये लैंग्वेजेस जानते हैं राइट. तो कंप्यूटर इनमें से कोई भी लैंग्वेज नहीं समझ सकता, कोई भी कंप्यूटर नहीं समझ सकता, करेक्ट. तो कंप्यूटर ना तो ऐसी लैंग्वेज कहेगा जो गौरव को समझ आएगी, ना गौरव को ऐसी लैंग्वेज बोल सकते हैं या समझा सकते हैं जो कि कंप्यूटर को समझ आए. सो कोई कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं है इधर, करेक्ट. सो यहाँ पे तो हम कम्युनिकेट कर ही नहीं पाएंगे. बट बिना कम्युनिकेशन के तो कैसे काम चलेगा. सो कंप्यूटर की खासियत समझते हैं, राइट. सो कंप्यूटर की क्या खासियत है, दैट जो कंप्यूटर होता है ना, ये बहुत ज्यादा कैपेबल है. इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट पुटिंग है, एंड ये बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस एंड हार्ड वर्क कर सकता है आपके अगेंस्ट, राइट. आप चाहे कैलकुलेशन कह लीजिए या फिर कोई गाना बजाने के लिए कह लीजिए, वीडियो चलाने के लिए कह लीजिए, ये सब काम कर देगा. और ये कोई कंप्लेंट भी नहीं करता अनटिल अनलेस इस पे बहुत ज्यादा लोड ना डालो. तो लोड डालोगे तो धीरे हो जाएगा, राइट. सिंपल एक ह्यूमन की तरह ही है ये. तो ये बहुत सिंपल ह्यूमन है, ये ज्यादा सोचता नहीं है मेरे को कौन यूज कर रहा है कौन यूज कर रहा, अनटिल अनलेस पासवर्ड लगा हुआ है. बट ये काम कर देगा अगर आप इसको अच्छे से समझाओगे ना, तो ये आपका सारा काम कर देगा. प्लस माइनस करने के लिए, वीडियो देखने के लिए, गाने बजाने के लिए, सब कर देगा, राइट. कभी भी कंप्लेंट नहीं करेगा अनटिल अनलेस आप बहुत ज्यादा लोड नहीं डाल देते. और अगर कोई इसमें दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हम भी बीमार हो जाते हैं कभी ना कभी, सिमिलरली इसमें भी कोई दिक्कत आ सकती है इसके हार्डवेयर में. तो एकदम ह्यूमन की तरह. बट इसमें एज ए ह्यूमन कोई इमोशन नहीं है. एज ए ह्यूमन इसमें कोई खुद का ब्रेन नहीं है, खुद से चीजें नहीं कर सकता, राइट. अनटिल आप इसमें एआई एमएल ना डाल दो, राइट. तो ये खुद से कुछ नहीं कर पाएगा, राइट. तो अभी तो ये बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्मार्ट है, सब कुछ कर सकता है, बहुत तेजी से कर सकता है, सब कुछ बहुत बेहतरीन है इंसान, बट खुद से कुछ नहीं करेगा. तो आप कह सकते हो एज अ ह्यूमन वी आर द मास्टर ऑफ अ कंप्यूटर, करेक्ट. तो हम एज अ मास्टर हैं इस कंप्यूटर के. तो हम इसे अपने लिए, अपने फायदे के लिए चीजें करवा सकते हैं. जैसे कि जो काम शायद से हो सकता है कि मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज अ वेबसाइट डेवलपर, मैं अगर सबको पब्लिसिटी करता किसी का जाके, तो दिन में शायद से 100 लोगों तक ही बात कर पाता, राइट. वेयर एज मेरी वेबसाइट हजारों लाखों लोग देख पा रहे हैं. कैसे? विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर. तो कंप्यूटर काम बहुत आसान कर देता है, इस वजह से हमारी डिपेंडेंसी उसके ऊपर है और कंप्यूटर की डिपेंडेंसी हम पे है. तो इसलिए कम्युनिकेशन हो पाना बहुत ज्यादा जरूरी है, करेक्ट. बट अभी डायरेक्टली हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल. तो क्या होता है कि ये जो लैंग्वेज कही जाती है, जो लैंग्वेज हमारी कंप्यूटर की होती है, इसे हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज. लो लेवल लैंग्वेज, करेक्ट. एंड ये जो लैंग्वेज होती है, जो हम बोलते हैं लाइक नॉर्मल लैंग्वेज है, करेक्ट. तो इसको भी कोई नाम नहीं देते. तो क्या होता है, हम हिंदी, इंग्लिश, गढ़वाली या फिर हरियाणवी, पंजाबी बोल सकते हैं, बट ये तो नहीं समझ सकता. तो क्या हुआ, ये प्रॉब्लम हम सबने फेस करी, एंड एक चीज का इजाद हुआ, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे आप टेक्स्ट लिख रहे होते हो कीपैड के अंदर, नोटपैड के अंदर, सिमिलरली आप नोटपैड के अंदर हिंदी में लिखोगे, इंग्लिश में लिखोगे, व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में लिखोगे, इंग्लिश में लिखोगे, या कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिख सकते हो नोटपैड में. सिमिलरली हम भी क्या करते हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो बनाई गई है, उनका भी एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, राइट. जैसे आप ये सारी लैंग्वेज को नोटपैड में लिख सकते हो, वैसे ही आप सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक नोटपैड में लिख सकते हो, राइट. तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेशल टाइप की लैंग्वेज होती है, जिसे हम नोटपैड पे या फिर किसी भी पर्टिकुलर कोड एडिटर में लिख सकते हैं, या फिर टेक्स्ट एडिटर में लिख सकते हैं. सिमिलर होती है, जैसे आप हिंदी इंग्लिश लिखते हो, वैसे ही आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी लिख सकते हो. जैसे आपने देखा था कि आप HTML को भी नॉर्मल इंग्लिश हिंदी की तरह लिख रहे थे, राइट. थोड़ा सा इसे लिखने का तरीका बदल जाता है,
बट लिखना टाइप सेम ही होता है। मेरे को क्या लगता था व्हेन आई वाज इन माय स्कूल दैट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन ओनली बी रिटन इन दैट ब्लैक स्क्रीन। एक ब्लैक स्क्रीन होती है, उसमें ही आप कोड कर रहे होते हो, बहुत खतरनाक सा दिखता है सब कुछ। ऐसा नहीं होता। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक सिंपल एक लैंग्वेज है, राइट? ये भी एक नॉर्मल इंग्लिश हिंदी गरवाली की तरह ही लैंग्वेज है, बट स्पेशली ये बनी है कंप्यूटर को समझाने के लिए, राइट? ताकि कंप्यूटर को इजीली चीजें समझ आए। तो एक स्पेशली टाइप की लैंग्वेज होती है, नॉर्मल इंग्लिश की तरह ही दिखती है, एक स्पेशल टाइप की लैंग्वेज है जो स्पेशली बनी है कंप्यूटर को समझाने के लिए। तो सिमिलर हो गई इंग्लिश की तरह, करेक्ट? और इसको आप कहाँ लिखते हो? नोटपैड के अंदर। तो मान के चलो आपने कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखे कि प्रिंट कर दो समथिंग एंड क्या कर दो, लाइक हेलो हेलो लिख दो, या फिर एक बार क्या कहते हैं कैमरा ऑन कर दो फॉर एग्जाम्पल। तो आपने 3 इंस्ट्रक्शन लिख दिए और किसके अंदर लिखे? नोटपैड के अंदर लिखे हैं। और कैसे लिखे हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ कुछ रूल्स होते हैं, जैसे आपको हिंदी और इंग्लिश में कुछ रूल्स होते हैं। जैसे हिंदी में आपको कोई भी चीज को, अगर कोई भी सेंटेंस को एंड करना होता है, आपको पूर्ण विराम लगाना होता है। जैसे आपको इंग्लिश में कुछ चीज खत्म करनी है एक सेंटेंस, तो आपको डॉट लगाना पड़ेगा, फुल स्टॉप। सिमिलरली हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिमिलर रूल्स होते हैं, करेक्ट? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत कुछ डिफरेंट नहीं होती, नॉर्मल लैंग्वेजेस की तरह ही होती है, राइट? बट स्पेशली बनी होती है टू गिव सम इंस्ट्रक्शन टू योर कंप्यूटर, करेक्ट? तो इतना क्लियर है सबको अभी तक कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, एंड अभी तक जो जो चीजें हमने देखी, ये सब चीज क्लियर है आप सभी को? गौरव को क्लियर है? ओके। अबाउट अनंत, अनिल एंड श्रुति, आपको भी वो चीज क्लियर है? ओके, क्लियर? हाँ, ग्रेट, काफी अच्छी बात है। ठीक है, तो हमने ये चीज तो समझ लिया कि एक स्पेशल टाइप की हमने लैंग्वेजेस डिफाइन कर दी एज इंजीनियर्स, जो हमें हेल्प करेगा कंप्यूटर को चीजें समझाने के लिए। कंप्यूटर बहुत बोला है, हार्ड वर्किंग है, दिन रात काम कर सकता है, बट बहुत बोला है। अनटिल आप इससे कुछ काम नहीं दोगे तब तक वो नहीं करेगा। तो उसके लिए हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इजाद करा। बहुत सिंपल होती है, हमारी लैंग्वेज की जिसकी तरह ही होती है, राइट? सो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड और लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, राइट? तो अब मान के चलो हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो सीख ली, बट स्टिल ये तो इंग्लिश में लिखी हुई है ना, राइट? इसको हमने लिखा तो सिमिलर इंग्लिश में है ना, तो हमने ये लिखा तो इंग्लिश में है, बट इसे समझाना तो 0 एंड 1s में है। तो क्या होता है, आप ये किस पे लिख रहे हो? आपने किस पे लिखा? मान के चलो नोटपैड पे लिखा, राइट? ये एक सॉफ्टवेयर पे आप लिख रहे हो, करेक्ट? तो अब आप क्या करोगे, इस जो कोड है ना, इसको आप क्या करोगे, आप एक और सॉफ्टवेयर के ऊपर रन कराओगे। ये सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, इन सॉफ्टवेयर का नाम होता है, इनको हम जनरली कंपाइलर्स या इंटरप्रेटर कहते हैं। इनके अलग अलग नाम होते हैं, तो इसको या तो हम कंपाइलर कह देते हैं या इंटरप्रेटर कह देते हैं, करेक्ट? सो क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर जैसे आपका नोटपैड आप यूज कर रहे हो, आप इन वाले सॉफ्टवेयर को भी डाउनलोड करते हो। आपको मैं यहाँ पे एक असाइनमेंट देने वाला हूँ, तो आप ये असाइनमेंट लिख सकते हैं कि आपको कल क्या पढ़ के आना है एज एन असाइनमेंट। आपको असाइनमेंट पढ़ के आना है कि डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। दिस इज योर असाइनमेंट, जो आपको पढ़ के आना कि ऐसा क्या होता है, राइट? तो इस तरह के आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, जैसे आपने नोटपैड डाउनलोड करा, हालांकि आता है ये डला हुआ, बट ऐसे आप सॉफ्टवेयर इसको भी डाउनलोड करते हो, राइट? अब क्या होता है, आपने कोड तो नोटपैड में लिख दिया, अब आप क्या करते हो, आप इस कोड को पास कराते हो अपने इस कंपाइलर सॉफ्टवेयर से, क्योंकि अभी तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा होता। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज भी, हाई लेवल लैंग्वेज, करेक्ट? और इसको हम क्या कहते हैं, लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। ऑलराइट, अब क्या है, आपने अपना जो कोड था उसको पास तो करा दिया सॉफ्टवेयर में, राइट?
अब क्या करेगा सॉफ्टवेयर, इसकी इंटरनल फंक्शनिंग ऐसी है कि ये आपके जो जो इंस्ट्रक्शंस है इसको 0 and 1 में कन्वर्ट कर देगा। तो ये एज अ कन्वर्टर होता है फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। तो यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज थी, इधर लो लेवल लैंग्वेज है, तो एक तरह का कन्वर्टर है बीच में। क्या होता है? कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर कन्वर्टर्स होते हैं बिटवीन हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। तो ये कन्वर्टर्स कन्वर्ट करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू 0 and 1 टू कंप्यूटर लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। तो इस तरह से आपने जो इंस्ट्रक्शंस लिखे मान के चलो आपने इंस्ट्रक्शन लिखा कि मुझे 2 का टेबल प्रिंट करके दो, जो आप लिख सकते हो। ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस आप लिख सकते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू। आप ये इंस्ट्रक्शंस लिखोगे हाई लेवल लैंग्वेज में, अब उसको कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है? लो लेवल लैंग्वेज, जो कि कंपाइलर होता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर के पास होती है। करेक्ट। एंड अगर ये चीज हो रही है कंप्लीटली अच्छे से, तो मतलब आपका कम्युनिकेशन अच्छे से हो गया। आप जो करवाना चाहते थे वो कंप्यूटर के पास पहुंच गया, एंड अगर उसके पास इंस्ट्रक्शन पहुंचा है तो वो डेफिनेटली करेगा। करेक्ट। एंड वाइस वर्सा इज आल्सो पॉसिबल। अगर वो कुछ आउटपुट दिखाना चाहता है तो सेम चीज यहां से जाएगी एंड आपको एक राइट वे में दिखेगा। तो इस तरह से पूरा का पूरा कम्युनिकेशन होता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस तरह से कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एग्जीक्यूशन होती है। करेक्ट। सो ये चीज क्लियर हुई आप सभी को कि कैसे आपने जो हाई लेवल कोड था उसको कैसे 0 and 1 में कन्वर्ट कर दिया। आपने कुछ नहीं करा, ये सॉफ्टवेयर्स आपको ऑलरेडी मिल जाते हैं, बस आपको इनको यूज करना होता है। आप बस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, आप उसको इस सॉफ्टवेयर के थ्रू पास करा के 0 and 1 मिल जाता है एंड आपका कंप्यूटर वो पढ़ पाता है। तो इस तरह से आपकी प्रोग्रामिंग वर्क करती है इन जनरल इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, be it C++, जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फंडामेंटली वो इस तरह से ही वर्क करती है। आपका कोड कन्वर्ट होता है 0 and 1 में और आपका कंप्यूटर वो काम कर देता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो जो आपने पास करे हैं सारा का सारा काम आपका कंप्यूटर कर देगा। तो इस चीज आप सभी को क्लियर है गाइस? एक बार बता दीजिए। ओके, Shruti is asking something. So yeah, guys, let me know like आप सभी को ये चीज क्लियर है, then we'll come into Shruti's. So compiler interpreter act as intermediate between human and system so that a computer can understand our language. Yes, absolutely, absolutely, Shruti, correct. You mentioned correct. Yeah, absolutely, that's correct. Yeah, okay, cool. Yeah, so yeah, that's pretty much the understanding. What exactly a programming language, how exactly these things are, what exactly these terms means. So to, if any of the term like compiler interpreter, you feel it like very new for the first time you're learning, definitely go and check out. As I mentioned an assignment for you, like you have to see the difference between them. So tomorrow I will ask everyone to for this, right? Yeah, so tomorrow I'm going to ask that. Correct. So guys, if you have any doubts, questions, you can ask. Otherwise, we are moving forward to other things. Any question, guys? Anyone? The best few resources of JavaScript. JavaScript.info. NDN Web Docs. W3 Schools. Let me share few resources with you, which will help you a lot while learning. So let me share the best resources. First, the best resource is the javascript.info. Underdog resource, I would say. A best resource, like super best. And people from like all over have recommended this resource. People generally don't share this. I think for like a couple of months, I haven't seen this resource, but yeah, it's super amazing resource. This is the first resource. Let me put this in the resource section. The second resource is your MDN doc. I think I've shared this. MDN doc is basically the actual documentation for your HTML, CSS, and JavaScript. So JavaScript is actually written inside this.
So all the actual updates, it is the official documentation for JavaScript. So where are the resources? I think I have here websites. So Mozilla I have already mentioned, correct? Let me put this resource, how internet works. I've shared this SEO things I've also shared. So let me put this javascript.info website over here. Also, the last resource is the W3 school. That will give you a hell lot of examples. So that's a very good resource to get started. Correct. So yeah, I think these are the resources that you should be focusing throughout. And if any resource you found and encountered it's very useful, do share. And let's see like how much valuable that is. Okay. So yeah. So important websites like let me resume collection. So this is the resume collection that I've made. Resume builder, the resume builder overleaf. Yeah, you can check out these resources. Super amazing resources are there. Okay, Dribble, Behance, and these are the resources that you can search for design resources. Right? So yeah, I think these are pretty much the resources that we need to know. Okay, so let's start with the first topic for this whole JavaScript session. So that is variables. So what are variables, guys? Like if anyone have read about worked with programming languages, who will tell what are variables? Value holders. Value holders, yes, absolutely. So can you please elaborate what are value holders? Like we allocate some space in the memory to a variable. Like we can change the values further in the Okay, yes. program. So those are variables, and we represent them by any character. There are rules to define the names of variables. Yes. So and you mentioned one thing as also, Anand, that is it actually saves some data in your memory. What is that memory? So address of memory. Which memory? There are like 5 types of memory. If you want me to mention them, so basically, RAM, I think. yeah. So RAM is there, ROM is there, disk is there, cache is there, registers are there. So there are a variety of storages. So which type of memory you are talking? I would say RAM. Yeah, correct. So in the RAM. Okay. So that's true. So Shruti saying container to store value. Yeah, correct. Anyone else like want to share some answers, like what exactly this variables means, right? So in simple terms, like if you have read in your 10th 11th, like I'm not sure in many of the classes, I think we have taken this kind of examples. Like for example, a math problem is given to you, right? So you say question 1 and you start writing answer 1. Like for example, in that question they would say like Reena is having 2 pencils. What you write, assuming Reena have n or x number of pencils, right? And what you write over then is that x equals to 2. And after this problem says that Reena asked her mother blah 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 that I want to buy twice the pencil I have right now, right? So that's a part of the question, right? So Reena asked her mother that she want to purchase x the 2 times the pencil she had right now, right? So you then after you write after
after shopping, Rina's current pencil are x equals to x plus 2x. That is x equals to 2 plus 2 into 2. That is 2 plus 4 equals to 6. So currently, the current number of pencils of Rina is currently 6, correct? So how many of you have like remember these kind of questions? Like, I think I remember this because I recently given these kind of questions. So yeah. So how many of you have remembered these kind of questions? Like currently Rina have 2 pencils. After some time, Rina asked her mother to buy twice more pencils, right? So this is how we solve these kind of problems, correct? So similarly, here you notice something that there is something like x, and in mathematics we say them, I think, variables. I think there also we say them variables, because x stores the value of number of pencils Rina have, right? Correct. And the number of pencil can vary. Like currently she might have 2 pencils. After her birthday she got like 20 more pencils, then it got 22, right? So x can contain many values, correct? It can contain different values over the period of time, right? But what exactly it is made up of? It is made for storing the value of a particular item, right? Maybe it could contain your age, maybe it could contain your personal number, it could contain maybe the pending task that you have, right? So that's what is known as your variable, right? This is what we call as variables in programming language. That can vary. Vary means that can change, correct? So here you can see that we are storing a value inside unknown keyword, you can say, or unknown, you can say. This does not have any value, correct? It does have a name, but it cannot have the value. So basically this 2 is actually getting stored inside this. So similar thing exists in programming languages as well, that are called as variables, correct? So here we are learning the concept of variables, right? Also, one thing I just hit into my mind is, most of the if you are learning this programming language for the first time, JavaScript or any other programming language or learning a bike or a scooty is very much similar. First time learning is a little bit difficult, but after that you can ride on any of them. Like the first programming language might be difficult for you, but after learning one particular bike or scooty, you can drive or ride any of other scooty or a bike. Similarly, when you completely learn one particular programming language, you can switch to any other programming language within two weeks at a good knowledge, because all the concepts like variables, loops, conditionals, objects, and all of these things are almost similar in all the programming languages, right? So you don't need to worry that there are hundreds of programming language. After learning JavaScript, you can switch to any of them. I started learning from C++, so I can work with any of the programming language. I can work up till like 10 languages, right? So that's not a miracle, that's not a big thing, because you have learned one particular bike or scooty. तो आपने एक चीज तो सीख ली अच्छे से, अब फिर कोई और भी गाड़ी एंड बाइक चला सकते हो, राइट? ये चीज सिमिलरली यहाँ पे भी अप्लाई होती है कि फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज बेसिकली इज अ बेस, उसके ऊपर आप कोई भी लैंग्वेज आप सीख सकते हो, बना सकते हो बहुत जल्दी से, करेक्ट? सो जावास्क्रिप्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं होगा कि आप सिर्फ जावास्क्रिप्ट डेवलपर, आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हो, करेक्ट? कमिंग बैक कि ये वेरिएबल्स क्या होते हैं, अब ये चीज समझते हैं। मान के चलिए आप कोई एक इंस्ट्रक्शन रखना चाहते हो, राइट? मान के चलिए आप इंस्ट्रक्शन देना चाहते हो अपने कंप्यूटर को कि मेरा जो नाम है उसको सेव कर लो ओम, करेक्ट? मेरा जो एज है उसको आप सेव कर लो 10,
एंड मेरी जो प्लेस है उसको आप सेव कर लो दिल्ली, करेक्ट। सो अगर आपको ये सारी की सारी चीजें सेव करानी है अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कंप्यूटर के अंदर, तो आप उन्हें वेरिएबल्स के अंदर डाल देते हो, करेक्ट। हो सकता है शायद से इन फ्यूचर आप बहुत छोटे हो, 10 साल के हो, आप बड़े होके अपना नेम चेंज करा दो, आप वेरिएबल में रखोगे। आपका एज है, वो एज तो बदल सकती है, करेक्ट। सो वो भी आप वेरिएबल के अंदर डालोगे। जैसे आप अभी मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, राइट। सो हो सकता है शायद से मैं बाद में कहीं और रहूं, तो इसलिए मैंने एक वेरिएबल में डाल दिया। सो जो कॉन्सेप्ट हमने हमारा जो मैथ्स में होता है कि आप इसके अंदर वैल्यूज को डाल सकते हो और चेंज कर सकते हो, वो चीज यहाँ पे वैलिड रहती है। मान के चलिए आपने 10-15 लाइन बाद क्या करा, अपने नाम को ही बदल दिया। मैंने अपना नाम चेंज करके रख दिया श्याम, करेक्ट। अब मेरा नाम तो चेंज हो गया, नहीं वैलिड है, आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको चीज को वैलिड मानती है। आपकी एज क्या हो गई थोड़ी देर बाद, आपकी एज हो गई मान के चलिए 11। तो ये सब चीजें वैलिड होती हैं आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। और ये जो स्पेशल नेम्स है, राइट, ये जो स्पेशल नेम्स है जब दे रहे हो जिसके अंदर आप अपना डेटा सेव करा रहे हो, राइट, इसे हम कहते हैं वेरिएबल्स। ये जो स्पेशल नाम आप दे रहे हो इन्हें, जब यहाँ पे स्पेशल नाम दिए हैं, एज, नेम, इन्हें हम कहते हैं वेरिएबल्स, करेक्ट। सो ये होता है आपके वेरिएबल्स। so that's pretty much what exactly variables are. So guys, वेरिएबल्स में किसी को कोई डाउट है क्या कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्यों हम इन्हें यूज करते हैं, एंड क्या इनका यूज केस होता है। अब यूज केस भी समझ लेते हैं। मान के चलिए मैं अपने कंप्यूटर को कहना चाहता हूं कि मेरा जो नाम है उसको 10 बार प्रिंट करिए, तो मैं से कह दूंगा कि लूप करो 1 to 10 एंड क्या करो, प्रिंट कर दो नेम, राइट। तो यहां पे क्या होने वाला है मेरा जो कंप्यूटर है यहाँ पे लूप करेगा। लूप का मतलब क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, कि वो बार बार चलेगा। कब से कहां तक चलेगा, 1 से लेके 10 तक चलेगा, और वो हर बार क्या करेगा, प्रिंट करेगा मेरा नाम, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ नेम नहीं, जो उसके अंदर की वैल्यू है वो चीज प्रिंट होगी, करेक्ट। तो आपने कहा तो नेम करने के लिए प्रिंट, बट नेम के अंदर जो वैल्यू है जो कि श्याम है वो प्रिंट होगी 10 बार। तो श्याम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बारी आपका श्याम प्रिंट होगा, करेक्ट। सो ये होता है इसका यूज केस, कि आप वेरिएबल्स को आप अपनी वैल्यूज को वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करते हो, एंड जब भी आपका यूज होता है आप उनको डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर लेते हो। एंड वेरिएबल्स अपनी वैल्यूज को बदल सकते हैं, जब जब आप चाहेंगे तब तक आप उसे बदल पाओगे, करेक्ट। सो ये कुछ है यूज केस ऑफ वेरिएबल। तो आप बताइए, आप सभी को इस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्लियर है, या फिर कोई डाउट है आपको, या फिर आपको एक बेटर एग्जांपल चाहते हैं तो हम वो चीज देखेंगे। ओके, गौरव को क्लियर है? ओके, रूपाली आल्सो गॉट क्लियर। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप प्लीज बता सकते हैं। हम एक बार वो चीज का एक दूसरा एग्जांपल भी देख लेंगे, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। बट हाँ, इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो। ओके, आई थिंक ये वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, राइट। ये तो हो गया हमारा वेरिएबल्स। अब क्वेश्चन मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, आई थिंक काफी लोगों ने काम किया हुआ है थोड़ा थोड़ा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, क्या हम कोई भी नाम रख सकते हैं वेरिएबल का? क्या हम कोई भी नाम रख सकते हैं? मान के चलिए हम कुछ भी नाम रख सकते हैं क्या? आनंद सिंह नो, श्रुति इज आल्सो सिंह नो, गौरव सिंह यस, रूपाली सिंह यस। तो देखते हैं क्या हम सारे नाम रख सकते हैं क्या प्रोग्राम वेरिएबल्स का, और क्यों नहीं रख सकते हैं आनंद बताएंगे। आनंद आप बताइए क्यों नहीं रख सकते हम कोई भी नाम? Sir, depending on the language, there are some restrictions for the naming of variables. So, like we cannot use digits in the starting of the variables, and there are other rules, but that depends totally on the language which we are going to study. करेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली हम दो केसेस के अंदर नाम नहीं रख सकते वेरिएबल का, राइट। अभी तो हमने क्या देखा, हम कुछ भी नाम रख सकते हैं वेरिएबल का, राइट। बट अभी हम क्या देखने वाले हैं, हम 2 केसेस के अंदर वेरिएबल का नाम नहीं रख पाएंगे।
So invalid variable names, करेक्ट। तो इनवैलिड वेरिएबल नेम्स कब आते हैं? तो पहला तो आता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स होते हैं, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स होते हैं। तो ये आपको मैं क्विक असाइनमेंट दे देता हूं, क्योंकि ये चीज बहुत इजी आप देख सकते हो। आपको एक क्विक गूगल सर्च में आपको करके दिखा दूंगा, बट हाँ आप इसको डिटेल में पढ़ना, राइट? तो डिटेल में पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्विकली तो समझा दूंगा, बट डिटेल में आप एक बार जरूर जाके देखना। तो इनवैलिड वेरिएबल नेम्स, तो जो हमारे जो वेरिएबल का हम नाम नेम लिखते हो उसका सेट ऑफ रूल्स होते हैं। जैसे कि आपका जो वेरिएबल है हमेशा स्टार्ट होना चाहिए कोई भी अल्फाबेट से, दैट्स इंपॉर्टेंट। आपका वेरिएबल स्टार्ट नहीं होना चाहिए किसी भी नंबर से या स्पेशल कैरेक्टर से, ये एक रूल है, राइट? वेरिएबल के बीच में एक तो कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर्स जो कि काफी लैंग्वेजेस डिपेंडेंट होता है कि वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं, राइट? तो मैं ऐसा करता हूं, मैं यहाँ पे सर्च करता हूं वेरिएबल नेम इन जावास्क्रिप्ट। तो इधर इन्होंने क्या लिखा हुआ है, द गिवन रूल्स, तो मतलब ये सही लिंक होने वाला है। तो जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर्स, तो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं आप एक बार इनके बारे में पढ़ सकते हो, राइट? तो अभी हम इस पे भी एक बार डिस्कस करेंगे, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं। आइडेंटिफायर्स, करेक्ट। सो हाँ, तो इधर इन्होंने कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, दैट नेम कैन कंटेन लेटर, डिजिट्स, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन। इसके अलावा कुछ भी आप डालोगे तो वो आपको एरर देगा। या तो आप लेटर्स यूज कर सकते हो, अल्फाबेटिकल लेटर्स, या आप उसके अंदर नंबर यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर का साइन और डॉलर का साइन, करेक्ट। नेम मस्ट बिगिन विद अ लेटर, तो मतलब नेम हमेशा स्टार्ट होना चाहिए एक लेटर से, करेक्ट। नेम कैन ऑल्सो बिगिन विद डॉलर एंड अंडरस्कोर। आप डॉलर और अंडरस्कोर से भी नेम को स्टार्ट कर सकते हो, बट नॉट विद बट वी विल नॉट यूज इट इन द ट्यूटोरियल, ओके। एनीवेज, बट आप कभी भी कोई भी वेरिएबल का नाम 1 2 3 से नहीं, या फिर कोई भी नंबर से नहीं लिखेंगे स्टार्ट, राइट? आप लिख सकते हैं ओम 1 2 3 अंडरस्कोर डॉलर, दैट इज वैलिड। बट आप कभी भी कोई भी वेरिएबल को एक नंबर से स्टार्ट नहीं करेंगे, जैसे कि 1 ओम, दैट इज नॉट वैलिड। नेम्स आर केस सेंसिटिव, राइट? and reserved word like keywords are not applicable. So case sensitive का मतलब क्या होता है वो चीज समझ लेते हैं। So case sensitive का मतलब ये होता है कि मान के चलिए आपने एक जगह लिखा नेम इक्वल्स टू ओम, एंड एक जगह आपने लिखा NA कैपिटल में इक्वल्स टू श्याम, राइट? तो ये दोनों, तो मान के चलिए अगर मैं प्रिंट कराऊंगा नेम को तो क्या प्रिंट होगा, ओम प्रिंट होगा। और अगर मैं प्रिंट कराऊंगा नेम को, कैपिटल वाले को, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, श्याम, करेक्ट। तो दोनों अपने आप में बिल्कुल अलग है, राइट? केस सेंसिटिव है कि जो स्मॉल लेटर में लिखा है ये बिल्कुल अलग है इस वाले से, करेक्ट। सो यहाँ पे हमारी केस सेंसिटिविटी दिखती है। जावास्क्रिप्ट हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब कि नेम स्मॉल में एंड नेम कैपिटल में बिल्कुल अलग है, करेक्ट। तो इसे हम कहते हैं केस सेंसिटिव लैंग्वेज, जिसके अंदर भले अल्फाबेट सिमिलर हो बट केस की वजह से, अपर केस एंड लोअर केस की वजह से ये दोनों अलग बन जाते हैं। इसे हम कहते हैं केस सेंसिटिवनेस, करेक्ट। तो ये होता है हमारा केस सेंसिटिव बिहेवियर ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, करेक्ट। तो ये था हमारा केस सेंसिटिव ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो हमारी जो जावास्क्रिप्ट है केस सेंसिटिव है, नेम्स आर केस सेंसिटिव,
y, small y and capital Y are different variables, जो कि इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, राइट. एंड रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड. अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ये तो सेट ऑफ रूल्स हो गए जो अभी हमने डिस्कस करे. तो ये तो हो गए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स. हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ कुछ कीवर्ड्स, कुछ कुछ वर्ड्स रिजर्व्ड होते हैं जिन्हें आप यूज नहीं कर सकते. कुछ कुछ कीवर्ड, कुछ कुछ वर्ड्स रिजर्व्ड है, राइट. तो इन्हें हम यूज नहीं कर सकते. इनको, इन वाले वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? कीवर्ड्स. कीवर्ड्स को हम यूज नहीं कर सकते वेरिएबल के लिए. जैसे कि कुछ कुछ कीवर्ड्स है, जैसे कंसोल हो गया, राइट, प्रिंट हो गया, अलर्ट हो गया. इन जैसे वर्ड्स को आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि जावास्क्रिप्ट इन्हें खुद से यूज करता है. इनका खुद का मतलब जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, करेक्ट. तो इसको आप यूज नहीं कर सकते. तो इन रिजर्व्ड को आप यूज नहीं कर सकते. एंड जो रूल्स हमें दे रखे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने कि आप इन्हीं में से यूज करिए, आप इन सेट ऑफ रूल्स की हेल्प से नाम दे सकते हैं, उन्हीं को यूज करना चाहिए, राइट. तो ये होता है हमारा वेरिएबल्स का नेमिंग. एक तो कुछ कुछ रूल्स हमें दे रखे हैं जो कि हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट रूल्स के अंदर, वेरिएबल्स के अंदर जाके पढ़ सकते हैं. दूसरा, कुछ रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कुछ कुछ रिजर्व वर्ड्स है, जैसे कंसोल, प्रिंट, अलर्ट. ये कुछ कुछ रिजर्व वर्ड्स हैं जिन्हें आप खुद से यूज नहीं कर सकते, करेक्ट. तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है नाम देते समय. और मोस्टली नाम आपको मिल जाएंगे, जैसे कि आप अपना नाम रखना चाहेंगे, कार हो गया, ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी. कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जो आप यूज नहीं कर सकते, वो आप धीरे धीरे करके समझ आ जाएगा, करेक्ट. आपको वो भी याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिजर्व कीवर्ड बहुत सारे हैं, थाउजेंड्स है, बट आपका काम चल जाएगा उनके बिना भी, करेक्ट. तो ये है ओवरऑल आपका वेरिएबल्स के बारे में. तो गाइस, आपको कोई, किसी को कोई भी डाउट है क्या? आपको कोई डाउट है क्या? क्लियर है सब? क्लियर है सभी को? ओके, गौरव, नो डाउट. एनीवन, लाइक किसी को कोई भी डाउट आता है तो प्लीज बताइए. लाइक कोई भी डाउट आता है, वेरी सिली डाउट, प्लीज, मोस्ट वेलकम. मेरे को यहाँ पे एक डाउट आ रहा है, मैं कुछ डाउट पूछ लेता हूँ. अदरवाइज लाइक मेरे को डाउट्स आ सकता है तो आई कैन आस्क. तो अभी क्या डाउट आ रहा है कि मान के चलिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने कहा कि ये तो मैंने एक वेरिएबल बना दिया, राइट. तो ये एक्चुअली में कैसे दिखेगा? एक्चुअली में कहाँ एग्जिस्ट करता होगा? अभी क्वेश्चन ये है कि ये कंप्यूटर के अंदर कहाँ जाएगा वेरिएबल, राइट. आपने सब तो लिख दिया, या आप एक जगह भी बना रहे हो, राइट. तो कंप्यूटर के अंदर कहाँ होगा, कैसे होगा, ये सब चीजें क्या है, राइट. तो बेसिकली अभी वेरिएबल्स कैसे स्टोर होते हैं वो चीज समझते हैं, राइट. आपने ये जो चीज लिखी है, तो आपकी कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी मेमोरीज होती हैं. आप चाहे तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं, बट एक मैं छोटा सा आपको ओवरव्यू देता हूँ. क्योंकि कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी मेमोरीज होती है. मेमोरीज बहुत टाइप्स की होती है. इस वाले मार्कर को यूज नहीं करते. ऐसे कहाँ गया वो मार्कर? एनीवेज, लाइक चलिए ये यार यूज कर लेते हैं. आइडियली आना तो चाहिए यहाँ पे. रिफ्रेश कर लेते हैं. अभी देखते हैं कि ये सारे मेमोरी के अंदर कैसे स्टोर होते हैं, कहाँ स्टोर हो रहे होते हैं, राइट. वो चीज क्विकली देख लेते हैं. हेलो हेलो. लाइक मेरे को लगता है मैं डिस्कनेक्ट हो गया था. मेरी आवाज आ रही है क्या सभी को?
हाँ आवाज आ रही है। ओके, ठीक, मैं थोड़े रॉन्ग नेटवर्क से कनेक्टेड था। हाँ, एनीवेज, ठीक है। तो हम क्या देख रहे थे कि अभी हमने ये जो वेरिएबल बनाया है, जहां पे भी सेव हो रहा है वो चीज को समझ रहे थे, राइट। तो हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले समझते हैं कि कंप्यूटर के अंदर मेमोरी कितने टाइप्स की होती है, राइट। तो कंप्यूटर मेमोरी की अब हम बात कर लेते हैं, कंप्यूटर मेमोरी की। तो कंप्यूटर मेमोरी बहुत सारी टाइप्स की होती है। तो जैसे कि रैम हो गया, कंप्यूटर के अंदर की रोम हो गई, आपकी डिस्क हो गई। डिस्क के अंदर हार्ड डिस्क एंड एसएसडी दोनों टाइप की है, राइट। फिर आती है आपकी कैश मेमोरी, राइट। कैश मेमोरी के बाद रजिस्टर्स आते हैं, राइट। सो आई थिंक यही मेजरली हम हमारी यूज हो रही होती है। बायोस, बायोस थोड़ा से डिफरेंट है। वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लाइक बायोस इज पार्ट ऑफ योर रोम इटसेल्फ। तो तो मेजरली आपकी यही सारी चीजें हम डेली बेसिस पे यूज कर रहे होते हैं। कैश एंड रजिस्टर्स तो आपके प्रोसेसर्स के अंदर होते हैं, तो वो तो नहीं तो आप एक्सेस में ले पाते। हालांकि हम काफी हद तक, कुछ हद तक तो इनको मैनिपुलेट कर सकते हैं, बट मेजरली हमारा डिस्क एंड रैम पे काम हो रहा होता है, करेक्ट। तो जितने भी आपके प्रोग्राम्स होते हैं, जितना भी आपका सॉफ्टवेयर रन कर रहे होते हैं, जितने भी आप सॉफ्टवेयर चलाते हो, वो कहाँ पे चलते हैं? रैम के अंदर। तभी कहते हैं कि अगर आप बहुत हैवी सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हो तो आपकी रैम ज्यादा होनी चाहिए। मान के चलिए आपकी 2 GB की रैम इतनी सी है, आपकी 2 GB की रैम इतनी है, तो इसके अंदर तो थोड़ा बहुत कोड फिट हो पाएगा, मतलब थोड़े ही इंस्ट्रक्शन आ पाएंगे, चल पाएंगे, करेक्ट। वहीं पे अगर 4 GB की रैम है तो उसमें ज्यादा एरिया है, तो उसमें ज्यादा इंस्ट्रक्शन चल पाएंगे। ऐसे ही 8 GB है तो उसमें और ज्यादा चल पाएंगे, 16 GB है उसमें और भी ज्यादा चल पाएंगे। तो रैम के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने हैवी सॉफ्टवेयर आप चला सकते हो, या कितने सारा मल्टीटास्किंग आप कर सकते हो, मतलब कितने सारे आप पैरेलली चला सकते हो सॉफ्टवेयर, करेक्ट। तो यहाँ पे वो चीज आती है। तो मोस्टली रैम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल जब आपको बहुत ज्यादा बहुत हैवी सॉफ्टवेयर चलाने या फिर बहुत सारे सॉफ्टवेयर चलाने, करेक्ट। तो मोस्टली आपके जितने भी सॉफ्टवेयर, जितने भी प्रोग्राम, जितनी भी सारी चीजें चल रही होती हैं, सारी की सारी रैम पे चलती है। तो मान के चलिए भाई हम 4 GB रैम पे वर्क कर रहे हैं, करेक्ट। एंड अब हम क्या करना चाहते हैं, इसके अंदर हम एक जगह पे सेव कराना चाहते हैं हमारा नेम। तो आपका जो नेम है, आपका जितने भी वेरिएबल्स है, जितने भी आपके वेरिएबल्स होंगे, वो क्या करते हैं, वो मेमोरी के अंदर, जब भी हम मेमोरी की बात करेंगे तो उसका मतलब होगा रैम और प्राइमरी मेमोरी, करेक्ट। तो आपका जो डेटा है, ये जो आपने वेरिएबल बनाया, उसके लिए एक स्पेस एलोकेट होगी। तो ये स्पेस किसको दे दी गई? इस वेरिएबल को। कौन सा वेरिएबल है ये? नेम। तो बेसिकली ये जो जगह है आपकी मेमोरी के अंदर, बहुत सारी बड़ी जगह है, इसके अंदर छोटी सी जगह हमने किसको दे दी? नेम को दे दी, करेक्ट। तो ये जगह का नाम है, जैसे कि आपका घर है, आपके घर का एक एड्रेस होगा, नाम होगा, सिमिलरली ये भी वैसे ही है। तो नाम जगह नहीं लेता, करेक्ट। तो जगह क्या लेता है? उसके अंदर की रखी हुई वैल्यू। तो आपने नेम के अंदर क्या डाला है? आपने नेम के अंदर डाला है ओम, करेक्ट। तो ये मेमोरी के अंदर जगह लेगा। और नाम, नेम क्या बता रहे हैं कि इसके अंदर की वैल्यू इधर रखी हुई है, इस स्क्वायर बॉक्स में, करेक्ट। सेम ऐसे एज के साथ भी होगा, एज को भी ऐसे मेमोरी मिल जाएगी। एंड इसके अंदर क्या वैल्यू पुट होगी? इसके अंदर 10 वैल्यू पुट होगी, तो इसके अंदर 10 चली गई। फिर एक और प्लेस के लिए भी एक जगह एलोकेट होगी, ये प्लेस हो गया। इसके अंदर क्या वैल्यू डाली आपने? इसके अंदर आपने डाला दिल्ली, तो इसके अंदर दिल्ली डाल देते हैं। और ये सारा काम कहां हो रहा है? आपकी रैम के अंदर चल रहा है, राइट।
काफी बार क्या होता है, आप कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसे लिख देते हो, आप है ना अपने कंप्यूटर से कहते हो बार बार एक ही काम करने के लिए, तो ये आपकी पूरी मेमोरी भर जाती है और इससे आपका कंप्यूटर क्या हो जाता है, हैंग हो जाता है। राइट, तो ऐसी भी स्टेट्स हम देखने वाले हैं, बट हम अवॉइड करते हैं ऐसी स्टेट से, क्योंकि हम कभी भी नहीं चाहेंगे हमारा कंप्यूटर हैंग हो जाए। अगर वो हैंग हो जाएगा मतलब उसका पूरा एकदम ब्रेन एकदम पूरी मेमोरी फिल हो चुकी है, अब वो कुछ नई इंस्ट्रक्शन नहीं ले सकता। करेक्ट, तो उसको सीधा बंद करना पड़ता है या फिर हार्ड स्टॉप करना पड़ता है। तो वो चीज हम हमेशा अवॉइड करते हैं कि ये पूरी मेमोरी भर जाए। अगर सारी मेमोरी भर जाएगी और भरते रहोगे आप, तो आपका कंप्यूटर हैंग हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। करेक्ट। तो वो चीज को हम अवॉइड ही करेंगे। करेक्ट, फिर आपने क्या करा, बहुत सारा कुछ कोड लिखा एंड फिर आपने क्या करा, नेम के अंदर आपने क्या डाल दिया, श्याम। तो अभी आपके अंदर नेम के अंदर क्या वैल्यू थी, नेम के अंदर अभी वैल्यू थी ओम, तो आपको ये चीज हटानी पड़ेगी। और आपने नई वैल्यू क्या डाली है, श्याम, तो आप वो यहां पे डालोगे। करेक्ट, तो इस तरह से एक्चुअली मेमोरी में ऐसे वर्क हो रहा होता है। जब भी आप किसी भी वेरिएबल के अंदर नई चीज डालते हो, तो पुरानी चीज को आप हटा देते हो और नई चीज उसमें डाल दी जाती है। आपने इधर क्या लिखा, एज का लिखा, 10 लिख दिया, तो मतलब एज में पहले कुछ था तो उसे हटाना पड़ेगा और इसके अंदर नई चीज डालनी पड़ेगी। करेक्ट, सो दिस इज हाउ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेमोरी सिस्टम वर्क्स एंड वेरिएबल स्पेसिफिकली, किस तरह से मेमोरी के अंदर वेरिएबल्स की वैल्यूज चेंज एंड अपडेट होती है। करेक्ट, एंड इसी तरह से जितना भी आपका सारा डेटा है, जो भी आप प्रोग्राम के अंदर डेटा स्टोर कर रहे हो, सब कुछ आपका मेमोरी के अंदर चलता है। मेमोरी मतलब रैम, जितनी आपकी रैम होगी उतनी आपके पास कैपेबिलिटी ज्यादा होगी, आप हैवी सॉफ्टवेयर और हैवी टास्क कर पाओगे। राइट, सो दैट इज प्रीटी मच अबाउट वेरिएबल्स। तो आप प्लीज सभी ये बता दीजिए कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया, कैसे हमने वेरिएबल्स बनाए और कहां पे वो वेरिएबल्स स्टोर होते हैं, और कैसे हर बार वो वैल्यूज को अपडेट करने पे कैसे फिजिकल मेमोरी के अंदर अपडेट हो जाती है वैल्यू। तो आप में से सभी को ये चीज समझ आ गई है क्या, या फिर कोई भी डाउट है आपको, प्लीज बता दीजिए। आप सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कैसे आपके जो वेरिएबल्स होते हैं कैसे मेमोरी के अंदर जाके सेव हो रहे होते हैं एंड कैसे वो अपडेट होते हैं जब भी आप अपडेट करना चाहते हो उन्हें। तो मीन्स ये है कि ये कहीं ना कहीं सिस्टम की मतलब परफॉर्मेंस पे भी करेंगे इम्पैक्ट, अगर हमने थोड़ा अगर हेवी हम, कोड लिखा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप बहुत ज्यादा वेरिएबल्स मान के चलिए, आपने ऐसा कोड लिख दिया कि आप वेरिएबल्स डाले जा रहे हो डाले जा रहे हो डाले जा रहे हो, तो एक टाइम के बाद आपके पास जगह नहीं बचेगी। राइट, तो तब आपको दिक्कत आएगी, आपका काइंड ऑफ कंप्यूटर हैंग कर सकता है। एब्सोल्युटली, तो वहां पे डेफिनेटली आपको दिक्कत आपके कंप्यूटर को झेलनी पड़ सकती है। हाँ, तो ये चीज आप सभी को क्लियर है क्या, एक बार प्लीज बता दीजिए कि यस और नो, क्लियर और नॉट। ओके, गौरव को क्लियर है, आनंद, श्रुति, ओके ग्रेट। एंड ये सारी चीजें सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको मिलेगी एंड सिमिलर वे में समहाउ इन एंड आउट फंडामेंटली सेम होता है। कुछ के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ा सा स्पेसिफिकली थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, बट फंडामेंटल सेम है। आपको सेम चीज C++ में भी देखने के लिए मिलेगी, जावा में भी देखने के लिए मिलेगी, पाइथन में भी देखने के लिए मिलेगी, और कोई भी गो लैंग्वेज, जावा उठा लीजिए, कोई भी लैंग्वेज उठा लीजिए, सब में आपको वेरिएबल्स ऐसा कॉन्सेप्ट मिलेगा। एंड ये जो चीजें जो आपने आज देखी हैं, जैसे कि वेरिएबल नेमिंग एंड ये सब, ये सारी चीजें सिमिलर रहती हैं। करेक्ट, तो हम अभी काइंड ऑफ एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में फोकस करें, आफ्टर दैट यू कैन स्विच टू एनी अदर लैंग्वेज, तो वहां पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट हाँ, अगर आपने ये चीज अच्छे से सीख ली तो दैट्स प्रीटी गुड। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से समझना जावास्क्रिप्ट के बारे में। आप में से काफी लोगों को अंडरस्टैंडिंग है, बट स्टिल आप एक बार क्विक रिवीजन ले सकते हैं W3 स्कूल से। तो आप क्या करिएगा, होम से स्टार्ट कर सकते हैं, वेरिएबल्स तक जा सकते हैं, सिंटैक्स वगैरह हम कल देख रहे होंगे कि एग्जैक्टली कैसे कैसे चीजें होती हैं, आउटपुट के हम कैसे निकालते हैं। तो आप एटलीस्ट यहाँ तक एक बार क्विक व्यू देख के आना कल की क्लास से पहले, इफ पॉसिबल। एंड या अगर कोई भी डाउट आता है तो आप प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, वी विल हैव अ क्विक सोल्यूशन फॉर दैट। ठीक है, ऑल्सो वन मोर थिंग,
क्योंकि हम इस पर्टिकुलर जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत ज्यादा कोड तो नहीं कर रहे होंगे इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, एचटीएमएल सीएसएस बहुत कम लिख रहे होंगे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट अपने आप में काफी बड़ा सब्जेक्ट, तो हम उस पर फोकस कर रहे होंगे। तो आपका ये जो असाइनमेंट था, अपना स्टोर करके, या फिर कोई भी आप अपना हिसाब से कोई भी ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हो, राइट, विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप एंड टेलविंड। तो आप विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप एंड टेलविंड एक कोई भी ई कॉमर्स स्टोर बनाइए, एंड उसके अंदर आप बूटस्ट्रैप एंड टेलविंड का यूज करिए, और उसको रिस्पॉन्सिव बनाने का ट्राई करिए। श्रुति ने अभी रिसेंटली एक काफी अच्छा वो दिया था, तो वो भी काफी अच्छा गुड एग्जांपल है रिस्पॉन्सिव डिजाइन का, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। एंड इस बार हम ट्राई करेंगे कोई ई कॉमर्स स्टोर बनाने का विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप एंड टेलविंड। अगर आप चाहें तो आपके पास कुछ और आइडिया है, तो मोस्ट वेलकम, कम अप विद योर सोल्यूशन। क्या आपको लगता है कि ई कॉमर्स हमने शायद से मिंत्रा में बना लिया, तो अगर आप खुद से कुछ और चीज ट्राई करना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर डिफरेंट डोमेन ट्राई करना चाहते हैं, तो आप वो भी चीज ट्राई कर सकते हैं, राइट। सो दैट्स अबाउट इट आई थिंक। बट हाँ, प्लीज ट्राई कि बूटस्ट्रैप तो इंटीग्रेट हो या फिर टेलविंड हो, दोनों में से कोई भी चीज चलेगा। बट माय रिकमेंडेशन वुड बी स्टार्ट विद बूटस्ट्रैप, टेलविंड एंड बाकी सारी लाइब्रेरीज इजीली समझ आ जाएंगी आपको बाद में। सो किसी का कोई भी डाउट है क्या क्लास के अंदर? एनीवन? क्या आनंद? सर एक डाउट है रिलेवेंट ऑफ दिस टॉपिक, लाइक आर यू फ्रॉम एमआईटी? यस, Okay. Just wanted to confirm. Any other doubt, Anand? No, sir. Not. Okay. Anyway, like किसी का कोई भी डाउट है क्या? Anyone have any doubt, questions, queries? You can let me know. And if not, so I think that's pretty much for this class. हम आगे काफी सारी चीजें देख रहे होंगे W3 जावास्क्रिप्ट के अंदर ही। Also, it's very important for your interviews as well. So काफी सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हम साथ साथ भी डिस्कस कर रहे होंगे कि ये भी चीज पूछी जा सकती है इंटरव्यूज के अंदर, राइट। तो गाइस, एनी क्वेश्चंस, डाउट्स? नो? इफ नो, No. yeah, okay, great. So अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आज की क्लास यहीं पे रैप अप करते हैं गाइस। These are the topics we covered. What is JavaScript? JavaScript functional programming. Resources of JavaScript. Object-oriented JavaScript. Thank you for joining us today. We hope you found this video helpful in clarifying your concepts. If you still have questions, don't worry. This is just the beginning. Stay tuned for the next part. And remember to subscribe for more programming and technical interview videos. Keep practicing and best of luck on your journey.